नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिन्निचारुगङ्गा लसादालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयं शूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्ज आनन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीदं प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणम् नात्मसुखं शान्तं सन्तापनाशं प्रसीदं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपनेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःख्योदितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशं शम्भो। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोत्कर्षये ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शम्भो प्रसीदति। इति श्री रुद्राष्टकं समाप्तम्।